हेलो स्टूडेंट्स, मैं बीएल शर्मा, मैथ्स साहब, डिस्कसिंग चैप्टर 4, that is linear equations in two variables of class 9th NCERT mathematics. In this class, I will be discussing important notes of this chapter that will be very useful when we do the exercise or any other questions related to this chapter. I will be using in this class both the languages, English and Hindi. Students, please pause the video whenever you require for it and please keep a notebook and pen with you. So here, first of all, before doing linear equations in two variables, we should discuss about linear equations in one variable. When an equation has only one variable of degree 1, then that equation is known as linear equation in one variable. Here you will see that if the equation is like this, it is written as 3x plus 4 is equal to 0. You will see here that is the degree of the variable, a highest power of the variable is 1. And there is sign of equality. And there is only one variable. So this kind of equation, when the degree of the variable is 1, then there is only one variable, this is said to be the linear equation in one variable. The standard form is, whenever it is written like I'm writing 3x is equal to minus 4. You take the right hand side, the minus 4, left hand side, you transpose it. So 3x plus 4 is equal to 0. This is the standard form of it. So the standard form, that is ax plus b is equal to 0, where x is the variable of degree 1 and a and b are real numbers. When we say real numbers, means either rational number or irrational number. Here very important thing is, यहाँ पे एक बहुत जरूरी ये है कि the coefficient of x should not be equal to 0. x का coefficient 0 नहीं होना चाहिए. a और b ये दोनों ही real numbers हैं. Real numbers means, again repeating, rational or irrational number. So this equation has only one solution. A linear equation in one variable always has only exactly one solution. We take an example here. We are taking the example of your NCERT book. The linear equation in one variable here is 2x plus 5 is equal to 0. यहाँ पे ये जो equation है, linear equation one variable का है, वो है 2x plus 5 is equal to 0. So we can solve it. 2x plus 5 is equal to 0. So 2x is minus 5. So x is minus 5 by 2. So on the number line, we can represent here it is x is equal we can represent this number minus 5 by 2 on the number line. That is minus 5 by 2. So its solution, or solution को हम दूसरा नाम भी देते हैं, the root of the equation is minus 5 by 2. This can be represented on the number line, and we have represented this minus 5 by 2 on the number line. So linear equation in one variable का exactly one solution होता है. Here it is very important. And then some examples of linear equation in one variable, that is 2x minus 5 is equal to 0. क्योंकि यहाँ पे ये x one variable है, x का coefficient 0 नहीं है, that is linear equation in one variable. Similarly, 4x plus 1 is equal to 0. That is also linear equation in one variable. Similarly, 2x minus 7 is equal to 0. That is also linear equation in one variable. Linear equation के लिए the degree means the highest power of the variable should be 1. देखिए इसका power 1 है, its power is 1, its power is all, highest power is also 1. Then we come to example number 4. Then example number 4 can further be written as simplification पे देखिए 5x plus 3x, that is 19 plus 9. So 8x
is equal to 28 और 8x minus 28 is equal to 0। ये भी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है क्योंकि यहाँ पे x का कोएफिशिएंट 0 नहीं है। And then how to find out the solution of it? The worksheet, the question number first is solve for x, means x का वैल्यू क्या होगा यहाँ पे देखिएगा। हम सॉल्व करते हैं। That is 10x minus 7 is 21. 10x can be written as now 21 plus 7, and 10x is equal to 28. X is 28 by 10. You can write as 2.8, or you can also write x is 28 upon 10. You can divide both sides by means 2. So that is 14 upon 5 answer. Either you can write in decimal form or you can write in fraction form. Both answers are correct. दोनों ही आंसर आपके correct हैं. Next example is solve for x, that is 5x plus 6 is equal to 11. So you can write here 5x plus 6 is equal to 11. 5x is 11 minus 6. 5x is 5. X is 5 upon 5. 5 upon 5, that is 1. So x is equal to 1. Answer. इस तरह से we can find out or we can solve a linear equation in two variable. इस तरह से हम linear equation in one variable. Linear equation in one variable का exactly one solution होता है. देखिए यहाँ पे ये one solution है, means value one नहीं, one solution, exactly one solution. That is only one solution. Or yes, we can write 2.8 in the fraction form, that is 14 upon 5. And now we come to linear equation in two variable, जो हमारा chapter है, that is linear equation in two variable. देखिए, see here. When an equation has two variables, both of degree 1, then that equation is known as linear equation in two variables. And its standard form is, means the standard form of linear equations in two variable is ax plus by plus c is equal to 0. हम इसको डिटेल में देखेंगे। ये a, b और c क्या है? देखिए x and y are variables here, and a, b and c are real numbers. Real number means rational numbers or irrational numbers. a is not equal to 0 and b is not equal to 0. देखिए a means coefficient of x 0 नहीं होना चाहिए, b means coefficient of y भी 0 नहीं होना चाहिए, और ये a, b, c तीनों real numbers हैं. The examples we can write here. 7x plus y is equal to 8 here. देखिए that is linear equation in two variables, because linear means the highest power, means the degree of both the variables should be 1. देखिए the x power 1, that is y power 1. Here p power 1, q power 1, x power 1, y power 1, x power 1, y power 1. हाईएस्ट पावर को हम डिग्री कहते हैं. तो किसी भी लीनियर इक्वेशन में अगर x और y दोनों ही वेरिएबल्स की हाईएस्ट पावर 1 हो, मींस पावर 1 हो या डिग्री 1 हो, तो हम उसके कहते हैं लीनियर. Why it is इक्वेशन? क्योंकि इसमें साइन ऑफ इक्वलिटी है. इक्वल का साइन जब होगा तो ये इक्वेशन बन जाता है. कितने वेरिएबल हैं? देखिए वन वेरिएबल इज x, अदर वेरिएबल इज y. In second, one variable is p and other variable is q. In third, one variable is x and other variable is y. In fourth, one variable is x and other variable is y. इस तरह से linear equation in two variable हुआ. Two variable because here are two variable, sign of equality है, equal का sign है, तो ये equation हुआ. Then writing in the standard form, that is very, very important here, student. You see here. Example number 1 of NCERT. Write each of the following equations in the form ax plus by plus c is equal to 0 and indicate the values of a, b and c in each case. I am taking example number 1, that is 2x
plus 3y is 4.37. स्टैंडर्ड फॉर्म में ये जो कांस्टेंट है वो लेफ्ट में आ जाना चाहिए और राइट में रहना चाहिए सिर्फ 0. सो फर्दर वी कैन राइट 2x plus 3y minus 4.37 is equal to 0. ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में हो गया बिकॉज ऑल द टर्म्स आर लेफ्ट ऑफ 0, लेफ्ट ऑफ इक्वलिटी. नाउ कंपेयरिंग विथ, अब हम इसको कंपेयर करेंगे. Now comparing with the standard form, that is ax plus by plus c is equal to 0. Comparing with the standard form. Here you compare both x, base 2x and ax. In place of x, and it means a will be equal to 2. Therefore, a will be equal to 2. Means the coefficient of x is a. Here the coefficient of x is 2. The coefficient of y is b. Here the coefficient of y is 3. So b is equal to 3. And here the constant term, जिसमें x और y नहीं होता है, ये constant term है, that is c, and c is -4. So we can write c is -4. So that is the answer of the first part of this question. ये हुआ हमारा standard form, that is the standard form. 2x plus 3y minus 4.37, that is equal to 0. ये standard form हुआ. Question में ये भी है कि हमें we have to find out the value of a, b and c. A will be 2, B will be 3, and C will be 4 in this case. And now we come to the second part of it. अब हम इसका second part solve करते हैं. देखिए, this is the second part. X minus 4, that is root 3y. स्टैंडर्ड फॉर्म में सारे टर्म्स को हमें साइन ऑफ इक्वलिटी के लेफ्ट में लाना है. इक्वल के साइन भी लेफ्ट में लाना है. नीचे 3y जो राइट हैंड साइड है उसको ट्रांसपोज करिए, उसको लाइए लेफ्ट हैंड साइड. सो वी कैन राइट हियर x माइनस रूट 3y माइनस 4 इज इक्वल टू 0. दिस इज इन द स्टैंडर्ड. यही इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है. Now what we do, compare with the standard form. Standard form है, that is ax plus by plus c is equal to 0. देखिए इसमें the coefficient of x is a and here the coefficient of x is 1. So we can say that a is equal to 1. फिर से देखिए x के coefficient हमने a ले रखा है और इस जो स्टैंडर्ड फॉर्म में हमारा जो है that is x minus root 3y minus 4 is equal to 0. उसमें x का coefficient 1 है. So it means a is equal to 1. What is b? The coefficient of y. And here the coefficient of y is minus root 3. हमको साइन के साथ लेना पड़ेगा. So b is equal to minus root 3. And what is c? C is constant here and constant here is -4. So what is c? C is equal to -4 and this is the answer of this question. And now we come to the third part of it. इसको मैं रिमूव कर देता हूं. Yes. The third part of it is 4 is equal to 5x minus 3y. We can also write 5x minus 3y is equal to 4. देखिए ये जो बैलेंसिंग है, इक्वेशन मींस बैलेंसिंग. लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड और राइट एंड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड. लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल होते हैं.
Here left hand side is 4 and right hand side is 5x minus 3y. क्योंकि हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लेफ्ट साइड लिखना होता है तो मैंने राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पे लिखा, लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म में देखिए द कांस्टेंट टर्म शुड आल्सो बी लेफ्ट ऑफ मीन साइन ऑफ इक्वलिटी। तो इस 4 को हमें लेफ्ट हैंड साइड लाना होगा। सो वी कैन राइट हियर 5x minus 3y minus 4 is equal to 0 and this is standard form। ये हमारा standard form। Now compare with the standard form to find out the value of A, B and C। That is ax plus by plus c is equal to 0. The coefficient of x is a. Here the coefficient of x is 5, so we can write a is equal to 5. Coefficient of y b is y, or coefficient of y is b. Coefficient of y is here minus 3. So in place of b, we write here minus 3. Here the constant term is c and here the constant term is minus 4. So c is equal to minus 4. This is the answer of this question. Standard form में कैसे लिखा हमने 5x minus 3y minus 4 is equal to 0, और फिर हमें after writing in the standard form we have to find out the value of a, b and c. So here a is 5, b is minus 3 and c is minus 4. Answer. Now next part of it is fourth part. How to write fourth part? First of all, I'll have to remove it. That is fourth part. That is 2x is equal to y. So x, y को you can write 2x is equal to 1y. इसका coefficient नहीं होता, write as one coefficient. So transfer y right hand side to left hand side, that is 1 minus 1y is equal to 0. But constant term भी होना चाहिए. So write 2x minus 1y plus 0 is equal to 0. Constant term यहाँ पे नहीं है, तो we can write here 0. Now with comparing this with the standard form, that is ax plus by plus c is equal to 0. What is a here? The coefficient of x is a. So here the coefficient of x is 2. So a is 2. What is coefficient of y? Coefficient of y is b. So here coefficient of y is minus 1. So b is equal to minus 1. And what is constant term here? Here constant term is 0. So we can write here c is 0. So students, like this we write first of all the given linear equations in two variable in the standard form, और फिर उसके बाद में coefficient of x, coefficient of y और constant term को हम इस तरह से write करते हैं, लिखते हैं. So that is the answer of this question. Write each of the following as an equation in two variable. यहाँ पे ये जो एग्जांपल नंबर 2 आपके एनसीईआरटी बुक का है, यहाँ पे केवल एक ही वेरिएबल दे रखा है. फर्स्ट पार्ट में x वेरिएबल है, सेकंड पार्ट में y वेरिएबल है, थर्ड में केवल एक ही वेरिएबल है और फोर्थ में केवल एक ही वेरिएबल. लेकिन क्वेश्चन ये कहता है
कि इनको टू वेरिएबल्स में लिखिएगा। सो हाउ टू राइट, फर्स्ट ऑफ ऑल मीन्स यहाँ पे y वेरिएबल नहीं, तो फर्स्ट इट वी कैन राइट x इज इक्वल टू -5. वी कैन राइट 1x. यस, y वेरिएबल नहीं है तो वी कैन राइट 0 into y दैट इज -5, बिकॉज 0 into y इज इक्वल टू 0. स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते हैं 1x plus 0y plus 5 is equal to 0. Whenever the coefficient of any number is 1, किसी भी नंबर, किसी भी वेरिएबल का कोएफिशिएंट अगर 1 हो तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है, और we can write x plus 0y plus 5 is equal to 0. This is answer of this first part. Then the second part, that is y is equal to 2. आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे इसमें x वेरिएबल नहीं, तो x वेरिएबल के लिए हमें क्या करेंगे कि वी कैन राइट 0 into x plus y is equal to 2, because 0 into x that is 0. Whenever any number is multiplied by 0 it becomes 0. 0 किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई होता है तो 0 होता है. So we can write 0x plus 1y minus 2 is equal to 0. And this is the we have written y is equal to 2, y is equal to 2 in the standard form, 0 into x plus 1 into y minus 2 is equal to 0. And now third, that is 2x is equal to 3. आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे y वेरिएबल नहीं है. जब वेरिएबल नहीं है तो you can write 0 into y. So we can write 2x plus 0 into y, that is 3. 2x plus 0 into y minus 3 is equal to 0. We have written this in the standard form, right? तो आपने देखा कि जो वेरिएबल नहीं होता है उसको 0 into that वेरिएबल से मल्टीप्लाई कर देते. देखिए सिर्फ y वेरिएबल नहीं था फर्स्ट पार्ट में तो 0 into y, सेकेंड पार्ट में x नहीं था तो 0 into x, थर्ड पार्ट में y नहीं है तो 0 into y, और फोर्थ पार्ट में x नहीं है तो देखिए दिस इज द फोर्थ पार्ट. Fourth part is 5y is equal to 2. X वेरिएबल नहीं है तो we can write 0 into x plus 5y is equal to 2. So 0 into x plus 5y minus 0 minus 2 is equal to 0, and we have written this in the standard form. So these are the questions and these are their answers here. This is example number 2 of your NCERT book, chapter 4, linear equations into variables. Next, now the solution of linear equations into variables. The solution of a linear equation in two variables is a pair of numbers 1 for x and 1 for y which satisfy the equation. There are infinitely many solutions for a linear equation in two variables. Very simple, very easy, but very important. How to find out the solutions? Solution कैसे find out करते देखिए. We are taking the example x plus 2y is equal to 6 और इसको solution find out करने हैं. So we have written here x plus 2y is equal to 6. You can draw a table here. यहाँ पे हम 3 solutions के find out करेंगे. तो देखिए, we have written here x and other here y. You can write y in term of x or you can also write x in term of y. So let देखिए first solution, let x is equal to randomly, आप अपनी मर्जी से x का कोई भी रियल नंबर आप ले लीजिए. Here I have taken x is equal to 0. So now I can write in place of 0 plus 2y is equal to 6. 2y is equal to 6. So y is 6 by 2. So y is equal to 3. So if x is equal to 0, then y will be 3. So if x is 0, y is 3. One solution. Further, let second equation, let x is equal to 6.
In this equation, x की जगह 6 put करो. 6 plus 2i is equal to 6. So we can write here the equation is x plus 2i is equal to 6. x की जगह 6 रिप्लेस करिए. x 6 plus 2i is equal to 6. 2i is 6 minus 6. 2i is equal to 0. y is 0 by 2. Whenever the numerator of any number is 0, it is equal to 0. So x की वैल्यू अगर 6 है तो y की वैल्यू 0 होगी. थर्ड में देखिए, लेट x is equal to 2. Our equation is x plus 2y is equal to 6. x की जगह 2 रिप्लेस करिए. x is 2 plus 2y is 6. 2i is 6 minus 2. 2y is 4. y is 4 upon 2, that is 2. So here x 2 है तो y भी 2 है. So if x is 2, y is 2 also. So now how to write the solutions here? In the coordinate system, we write here first x is equal to 0 and y is equal to 3. X is equal to 0 and y is equal to 3. One solution. Second, if x is equal to 6, y is equal to 0, x is equal to 6, y is equal to 0. Second solution. Third, if x is equal to 2, then y is equal to also 2, that is 2, 2, that is third solution. इस तरह से we can find out infinitely many solutions. Endless solution होते हैं. x का वैल्यू कोई भी रियल नंबर लेते जाइए और y का वैल्यू automatically we get the value of y. So students, a very important question is how many solutions a linear equation in two variables has. We can say that a linear equation in two variables has infinitely many solutions. एक linear equation in two variable के कितने solutions होते हैं? Answer होगा endless, infinitely many solutions. Then, since the solution of a linear equation in two variable is a pair of numbers, one is x and other is y, we can represent the solution in a coordinate plane. इसको हम coordinate plane में means the first component है x coordinate and second is y coordinate. इस तरह से हम इसको ग्राफ पेपर पे प्लॉट कर सकते हैं इनके solutions को. देखिए कैसे. Consider the equation 2x plus y is equal to 6. It is linear equation in two variable, and we know a linear equation in two variable has infinitely many solutions. तो हम कैसे इसको प्लॉट करेंगे? तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल इसका हम सॉल्यूशन निकालते हैं. दैट इज 2x plus y is equal to 6 इक्वेशन है. लेट x का वैल्यू आप 0 लें, then you will be getting 2 into 0 plus y is equal to 6. So 0 plus y is equal to 6. So y is equal to 6. तो ये हो गया एक, इसका सॉल्यूशन हो गया 0,6. So here you can say if x is 0, then y is equal to 6. This is the way how to write, right? एक solution for x का. Infinitely many solutions इसके होते हैं, देखिएगा. Then we can find out the other solutions also. So here we can find out the other solutions. That is the second solution of it. The equation is 2x plus y is equal to 6. अब आप चाहें तो let y is equal to 0 ले सकते हैं. So 2x in place of y you put 0, that is 6. So 2x is 6. X is 6 by 2, so x is equal to 3. तो solutions क्या हुए? Solutions are 3, 0. ध्यान रखिएगा, जब हम solution लिखते हैं तो ये जो फर्स्ट कंपोनेंट होता है x का होता है और सेकंड कंपोनेंट हमारा y का होता है. Here x is 3, so we have written here x3 and y is equal to 0.
and we have written here y is equal to 0. So here you will see x is 3 and y is equal to 0. Similarly, you can find out so many solutions. So many solutions you can find out here. As you will be finding here one more solutions here for you. एक आपके लिए और solutions. ये जरूरी नहीं कि जो मेरा solution है वो आपका solution होगा, क्योंकि endless, infinitely many solutions are there. So the third solution is, we can write here the third solution. Yes. Our equation is 2x plus y is equal to 6. I can take late x is equal to 1. So 2x plus y is equal to 6. X की जगह 1 replace करिए, plus y is equal to 6. तो 2 plus y is equal to 6. Y is equal to 4. So we can write here x is equal to 1 and y is equal to 4. That is also the solution. X component is 1 and y component is 4. So we can write x is equal to 1 and y is equal to 4. इस तरह से हमने इसके 3 solutions find out किए. 0,6 one solution, 3,0 second solution, 1,4 third solution. Thus we can find out infinitely many solutions. अब इन पॉइंट्स को हम ग्राफ पेपर पे रिप्रेजेंट करते हैं. देखिए, फर्स्ट सॉल्यूशन इज 0,6. 0,6. Here x is 0 and y is 6. So we can write, let this point is A. That point is 0,6. 0,6. Second point is 3, second solution is 3,0. आपको ग्राफ पेपर पे तलाशना होगा कि 3,0 कहाँ लाई करता है. देखिए, this is 3,0. Here on the x-axis, x is 3 and y is 0. So this point is B. And third solution is 1,4. Here see, this point is 1,4. We mark it like there. Let this point is C. ये 3 पॉइंट हमने जो 3 solutions इसके हैं, we plot these all points, means all coordinates on the graph paper, and then we join. We find that it is a straight line. Linear equation in 2 variables के solutions को जब ग्राफ पेपर पे प्लॉट करते हैं तो हम देखते हैं, और उनको किसी जब ज्वाइन करेंगे तो हम ये देखेंगे कि they all lie on the same straight line. तो ये सेम स्ट्रेट लाइन से जो लाइन बनी है, दैट इज द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन, दैट इज 2x plus y is equal to 6. Yes. So a linear equation, the graph of a linear equation in 2 variable is a straight line. इसीलिए इसको लीनियर कहते हैं. LINE, लाइन बनता है जैसे. So how to draw the graph of a linear equation in 2 variables? फर्स्ट उसके 3 सॉल्यूशंस फाइंड आउट करें, कोऑर्डिनेट सिस्टम में लिखें और उनको ग्राफ पेपर पे तीनों पॉइंट को प्लॉट कर दें. तीनों पॉइंट को जैसे ही आप प्लॉट करेंगे उनको फिर ज्वाइन करें. आपको जो स्ट्रेट लाइन बनेगा वो स्ट्रेट लाइन ही, ये जो स्ट्रेट लाइन है वो ही लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का ग्राफ होता है. सो एंड अदर थिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. जब आपने ये ड्रॉ ग्राफ बना दिया, इसका जो लाइन है, इसका कोई भी पॉइंट होगा, देखिए दिस इज द पॉइंट 2,2. इस लाइन पे जो भी पॉइंट होगा, इस ग्राफ पे जो भी पॉइंट लाई करेगा, वो इस लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का सॉल्यूशन होगा. देखिए यहाँ पे 2,2 पॉइंट इज आल्सो लाइंग ऑन दिस ग्राफ. इस ग्राफ पे ये 2,2 पॉइंट है, वो है. हम देखते हैं कि क्या इसको सेटिस्फाई करता है. वी राइट हियर, सी हियर, that is 2x plus y is equal to 6. We have to see that this 2,2, this point 2,2 is the solution or not. So put left hand side. X is equal to 2 put करें, 2 into 2, और y की जगह भी 2 put करें, 2. That is 2 to the 4, 6, and that is equal to right hand side. जैसे इसकी वैल्यू को x is equal to 2 and y is equal to 2 पुट करेंगे इस इक्वेशन में, तो ये राइट हैंड साइड आपकी वैल्यू आ जाएगी, that is 6. So we can say that yes, we can take any 2 points and join those 2 points to make a line.
Okay, let the line be PQ. इसकी line PQ आपका बना है. It is observed that all the 4 points are lying on the same straight line PQ. Next is consider any other point. यहाँ पे इस इक्वेशन पे हमें पॉइंट कंसिडर किया, that is 4, -2. This point is this point is this point is this point is 4, -2. ये पॉइंट है, इसी स्ट्रेट लाइन पे लाई करता है. ये 4, -2 भी इस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का 2x + y = 6 का सॉल्यूशन है. इसको वेरीफाई करें. यू राइट 2x + y, दैट इज लेफ्ट हैंड साइड. कैसे वेरीफाई करते हैं कि सॉल्यूशन है कि नहीं है? अब इसके अंदर क्या करें कि पुट x = 4 and y = -2. Put x = 4 and y = -2. देखिएगा 2 as it is, that is 2. x इसमें x की जगह 4 पुट किया और y की जगह -2 पुट किया, तो 8 - 2 that is 6. yes, और ये आपका राइट हैंड साइड है 6, that is equal to the right hand side. So we can say that every point lying on the same straight line will be the solution of the linear equation which is given. Right? Line passing through the origin. कौन सी, कैसे आप इक्वेशन को पहचानें, कैसे आइडेंटिफाई करें कि वो जो जिससे जो ग्राफ बनेगा, we know that a linear equation in two variable always has infinitely many solutions. तो वो कहां से पास होना चाहिए? Origin means that should be passed through 0, 0. The coordinate of the origin are 0, 0 and this is origin. Yes. तो उसके लिए देखिएगा, you can take the solution here. Yes, see, ax plus by should be equal to 0, means constant term 0 होना चाहिए. Yes, we can say that x plus y is equal to 0. देखिए इसका x is equal to 0 लिया, तो 0 plus y is equal to 0, it means y is equal to 0. तो y कोऑर्डिनेट भी इसका 0 आ गया. तो इसमें देखा आपने कि कांस्टेंट टर्म यहाँ पे 0 है. कांस्टेंट टर्म 0 जब किसी भी इक्वेशन का होता है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का होता है, then that linear equation, the graph of the linear equation passes through these origin. Yes, you can take any equation here. कोई भी आप इक्वेशन लीजिएगा, यहाँ पे देखिएगा. Yes, you can take here 3x plus 10y is equal to 0. Yes, constant term 0 है. That is why the graph of this linear equation into variable will pass through the origin. 4x plus 3y is equal to 0. Yes, this will also pass through the pass through the origin यहाँ पे. But x plus 3y plus 7 is equal to 0. Yes, यहाँ पे ये constant term 0 नहीं है. That is why the graph of this equation will not pass through the will be passes through the origin. तो आप देखते ही आइडेंटिफाई कर देंगे कि अगर कांस्टेंट टर्म 0 है, मींस कांस्टेंट टर्म नहीं है किसी भी लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल में, तो जब उसका 3 सॉल्यूशन लेके ग्राफ बनाएंगे तो उसका ग्राफ ओरिजिन से पास नहीं होगा. अगर कांस्टेंट टर्म अदर देन 0 है तो वो लाइन उस इक्वेशन का ग्राफ कभी भी ओरिजिन से पास नहीं होगा. एंड नाउ the coordinate axis, namely x-axis and y-axis, can be represented as y is equal to 0 and x is equal to 0. जब हमने चैप्टर 3 किया था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उसमें मैंने बताया था कि अगर y is equal to 0 है, that y is equal to 0, तो यहाँ पे ये रिप्रेजेंट करता है x-axis को. Yes. Means y means coordinate का वैल्यू हमेशा ही x-axis पे 0 होता है. If x is equal to 0 है, the value then that represents the y-axis. तो कई बार what is the graph of y is equal to 0, हम कहेंगे x-axis. What is the graph of the equation x is equal to 0, हम कहेंगे that is y-axis. So now again we are discussing the theory part, means notes of this chapter.
that is linear equations in two variables. That is the chapter 4 of class 9 NCERT. Graph of the linear equation in one variable. We can mark the point of the linear equation in one variable on the number line. देखिए, you are taking here let x is equal to 2. ये हमारे पास वन वेरिएबल है और इस वन वेरिएबल में हमें केवल एक ही पॉइंट पे आप नंबर लाइन बनाइए और इस पे x is equal to 2 उस पॉइंट को मार्क कर दीजिए. So the graph of a linear equation in one variable is a point. That is a point. But find any two solutions for the equation 2x plus y is equal to 7. हमें पता है कि a linear equation in two variables has infinitely many solutions. लेकिन हमें यहाँ पे केवल क्वेश्चन में है कि find any two solutions. So let first part is the equation is 2x plus y is equal to 7. आप लीजिए let y is equal to 0. You can write 2x plus 0 is 7. 2x is 7. So x is 7 by 2 or x is 3.5. So one solution is 3.5, 0. ध्यान रखिए, first we write x component and then comma, then we write y component. Second, the equation is 2x plus y is equal to 7. We let x is equal to 0. x और y की जगह हम कोई भी रियल नंबर ले सकते हैं. रियल नंबर्स मीन्स रेशनल और इरेशनल. तो 2 into 0 plus y is equal to 7. 0 plus y is equal to 7. So y is equal to 7. So other solution is 0, 7. Let we need more solutions, then again write 2x plus y is equal to 7. Let, yes, so let, you can say let x is equal to 10. So 2 into 10 plus y is 7. 20 plus y is 7. Y is 7 minus 20. So y is minus 13. So third solution, we can write 10 minus 13. These are the solutions of the linear equation of which is 2x plus y is equal to 7. We can find out infinitely many solutions of the linear equation in two variables. लेकिन क्वेश्चन में हमें टू ही सॉल्यूशन पूछे हैं और मैंने यहाँ पे 3 दे दिया आपको, बट नो प्रॉब्लम. Then next example, do the graph of the equation 3x plus 4y is equal to 12. इसका ग्राफ बनाइए. We know that linear equation in two variables, the graph of the linear equation in two variable is always a straight line. So पहले हमें इसके 3 solutions find out कर लेने चाहिए. देखिए, here it is 3x plus 4y is equal to 0. So let take x is equal to any real number. So 3 into 0, sorry, this is 12. 3x plus 4y. So 3 into 0, 4y is 12. 4y is 12, y is equal to 3. So one solution is 0, 3. That is x is equal to 0 and y is equal to 3. Then we find second solution of it. The equation is 3x plus 4y is 12. Let y is equal to 0. So 3x plus 4 into 0, that is 12. जहां भी y है 0 पुट करिए.
So 3x plus 0 is equal to 12. 3x is 12. X is 12 upon 3 is 4. So the other solution is 4, 0. स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले हम x कंपोनेंट लिखते हैं और उसके बाद हम y कंपोनेंट. x is 4 and y is equal to 0 here. Yes. So the second solution is 4, 0. ग्राफ बनाने के लिए हमें केवल दो ही कंपोनेंट की जरूरत पड़ती है, दो ही सॉल्यूशंस की जरूरत पड़ती है. That is 0, 3 and 4, 0. So here we can draw the graph. First of all, we have to plot the point 0, 3. S is equal to 0 and y is equal to 3. This one. This point is 8. A point is 0, 3 and B point is 4, 0. And this point B is 4, 0. Now, and this point A is 0, 3. Now, you can draw the graph of it. आप इसका ग्राफ बनाइए. देखिए, you join this 3 and this 4. Produce both the side. दोनों तरफ इस लाइन को आप प्रोड्यूस कर दीजिए. ये जो स्ट्रेट लाइन है जो दोनों A और B पॉइंट को ज्वाइन कर रहा है, यही है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. इसी 3x plus 4y is equal to 12 इसका ग्राफ. इसका नाम भी लिख दीजिए यहाँ पे, दैट इज 3x plus 4y is equal to 12. ये जो स्ट्रेट लाइन बनी है वो किस लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल से बनी है, दैट इज 3x plus 4y is equal to 12. तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए क्या करेंगे, पहले इसके कोई टू सॉल्यूशंस लेंगे. हमने टू सॉल्यूशंस लिए 0,3 एंड 4,0. फिर जो भी सॉल्यूशंस है उसको ग्राफ पेपर पे प्लॉट करेंगे, दैट इज 0,3 एंड दिस इज 4,0. फिर हम इसको इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे, दोनों तरफ इसको एक्सटेंड कर देंगे तो एक लाइन बन जाएगा, ये स्ट्रेट लाइन बनेगा. सो द लीनियर इक्वेशन in two variable, the graph of the linear equation in two variables is always a straight line. A linear equation in two variable has infinitely many solutions. And then equations of lines parallel to the x-axis and y-axis. x कोई भी लाइन जो x-axis से कब पैरेलल होगा और y-axis के कब पैरेलल होगा देखिएगा. यहाँ पे केवल एक ही वेरिएबल है, x minus 5 is equal to 0. x minus 5 is equal to 0. पहले तो हम ये डिसाइड करना पड़ेगा कि हम x minus 5 is equal to 0 वन वेरिएबल ले रहे हैं कि टू वेरिएबल ले रहे हैं. अगर हम इसको केवल वन वेरिएबल लेंगे तो इसका केवल एक ही सॉल्यूशन होगा और उसको ग्राफ पेपर पे आप रिप्रेजेंट कर सकते हो. सॉरी, नंबर लाइन पे 0, -1, 1, 2, 3, 4 and 5. So here you can write x is equal to 5. Yes, that is a linear equation in one variable, only in one variable. लेकिन अगर इसी को आप टू वेरिएबल पे रिप्रेजेंट करेंगे तो फिर स्ट्रेट लाइन बनेगा और वो स्ट्रेट लाइन बनेगा इधर द पैरेलल ऑफ एक्स एक्सिस और पैरेलल ऑफ वाई एक्सिस. तो इसको अगर हम टू वेरिएबल्स में कन्वर्ट करें तो देखिए, I am taking here x minus 5 is equal to 0, right? टू वेरिएबल में कन्वर्ट करेंगे तो x plus 0y is 5, right? यहाँ पे y वेरिएबल नहीं था, मैंने इसका कोएफिशिएंट 0. तो now see, you can take late y is equal to 0. You can write x plus 0 into 0 is 5. So x is 5. So one solution is 5, 0. Late, second solution लेते हैं. y is equal to 1. So x plus 0 into 1 is equal to 5. When 0 is multiplied by any number, that is 0. So x is equal to 5. So second solution is 5, 1. Similarly, we can take the third solution. Let y is equal to 3. So x plus 0y is equal to 5. जहां भी ये y है 3 पुट करिए, that is 5. So x is equal to 5.
So third solution is 5, 3. हमने ऑब्जर्व किया कि ऐसे क्वेश्चन में y का वैल्यू तो चेंज हो रहा है लेकिन x का वैल्यू फिक्स है 5,0, 5,1, 5,3. इन पॉइंट्स को हम ग्राफ पेपर पे रिप्रेजेंट करते हैं. देखिए 5,0, that is 5,0, then this is 5,1 and that is 5,2, sorry 3. ये 5,3 that is 5,0. तो आप ये देखेंगे कि जैसे ही मैं इनका ग्राफ बनाऊंगा, इनको ज्वाइन करूंगा, यू विल गेट अ स्ट्रेट लाइन. दैट इज द स्ट्रेट लाइन ऑफ दिस एंड दैट इज द स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू व्हिच एक्सिस? वाई एक्सिस. सो आप ध्यान रखें, दैट इज वाई आप ये ध्यान रखें कि x इज इक्वल टू 5 इज समथिंग है, इसमें y वेरिएबल नहीं है, तो ये जो लाइन बनेगी और ये लाइन बनेगी किसके? parallel to yx. Similarly, if y plus 5 is equal to 0 है, यहाँ पे x की वैल्यू हमेशा ही 0 रहेगा, मीन चेंज हो सकता है. यहाँ पे x वेरिएबल नहीं है, this will be a line. This line will be parallel to x axis. Yes. x minus 5 is equal to 0. देखिए x minus 5 is equal to 0. This is x minus 5 is equal to 0. Sorry, x is equal to 5. ये जो लाइन है x minus 5 is equal to 0. We can also write this as x is equal to 5. ये लाइन बनेगा parallel to y axis. This is y axis. और जिसमें x वेरिएबल नहीं है, y minus 5 is equal to 0 means y is equal to sorry, it is we can write here y minus 5 is equal to 0. We can write here y minus 3 is equal to 0. So this line will be y minus 3 is equal to 0. This line will be parallel to x axis. ग्राफ ड्रॉ करने के लिए इसके 3 सॉल्यूशंस फाइंड आउट करिए. पहले तो 2 वेरिएबल में कन्वर्ट करिए इसको, फिर इसके 3 पॉइंट्स फाइंड आउट करिए, ग्राफ पेपर पे प्लॉट करिए, ज्वाइन करिए. आपको पता चलेगा कि ये एक स्ट्रेट लाइन है. स्ट्रेट लाइन है, इफ देयर इज नो y वेरिएबल विल बी पैरेलल टू y एक्सिस. देयर इज नो x वेरिएबल पैरेलल टू x एक्सिस. And now the key points, it can be concluded that for a linear equation in two variables, हम conclude करने जा रहे हैं. Every point on the line will be a solution to the equation. Every solution of the equation will be a point on the line. Therefore, every linear equation in two variables can be represented geometrically as a straight line. हमने डिस्कस किया कि कोई भी linear equation जो two variable में है, उसका ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन बनता है इन अ कोऑर्डिनेट प्लेन. पॉइंट्स ऑन द लाइन आर द सॉल्यूशन. और अगर जो ग्राफ हमारा बना है, जो लाइन बनी है, उस पे कोई भी पॉइंट होगा, कोई भी कोऑर्डिनेट होगा, उस गिवन इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा. Points on the line are the solution of the equation. This is why equation with degree 1 are called a linear equation. क्यों इसको linear equation कहते हैं? क्योंकि इनका ग्राफ से एक लाइन बनती है. This representation of a linear equation is known as graphing or graph of a linear equation in two variables. जो भी linear equation in two variables से उसका 3 solution लेके उनको ग्राफ पेपर पे प्लॉट करने से, फिर पॉइंट्स को ज्वाइन करने से जो लाइन बनती है, वो ही उस linear equation in टू वेरिएबल का ग्राफ होता है. सो रिविजिट, हमने क्या इसमें रीड किया है आप देखिएगा. A linear equation in two variables, any equation which can be put in the form ax plus by plus c is equal to 0, where a, b and c are real numbers and a and b are not both 0, is called a linear equation in two variables. We already have discussed. A linear equation in two variable has infinitely many solutions. We already have discussed. The graph of a linear equation in two variable is a straight line. We already have discussed. If x is equal to 0, किसका equation है? Is the equation of y axis, and y is equal to 0 is the equation of the x axis.
जब आपको कहें कि व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस, आपको लिखना होगा y इज इक्वल टू 0 एंड इक्वेशन ऑफ y एक्सिस आपको लिखना होगा x इज इक्वल टू 0। द ग्राफ ऑफ x इज इक्वल टू a, यहाँ पे y वेरिएबल नहीं है, तो ये जो भी इसका ग्राफ बनेगा दैट विल बी पैरेलल टू y एक्सिस। सिमिलरली द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू a मींस यहाँ पे x वेरिएबल नहीं है, इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द x एक्सिस। An equation of the type y is equal to mx means यहाँ पे constant term नहीं है, तो will represent a line passing through the origin. Every point on the graph of a linear equation in two variable is a solution of the linear equation, and moreover, every solution of the linear equation is a point on the graph of the linear equation. And now, the example number 3 of your NCERT. Find 4 solutions. So we can write x plus 2y is equal to 6. Let x is equal to 0. So 0 plus 2y is equal to 6. 2y is equal to 6. So y is equal to 3. So one solution is 0, 3. Again we write x plus 2y is equal to 6. Let y is equal to 0. हम x और y में से किसी का भी कोई भी रियल नंबर एक चूज कर सकते हैं। सो x plus 2 into 0 is equal to 6. So x is equal to 6. So second solution is, or we can write 6, 0. Again, x plus 2y is equal to 6. Let suppose y is equal to 2. So we can write x plus 2 into 2, that is 6. X plus 4 is equal to 6. X is equal to 2. So the third solution is 2, 2. We can write fourth solution. That is the equation is x plus 2y is equal to 6. Let कुछ भी वैल्यू ले लीजिए, let y is equal to 10. So x plus 2 into 10 is equal to 6. X plus 20 is equal to 6. X is 6 minus 20. X is minus 14. So third solution is minus 14, 10. Next solution, क्योंकि 1, 2, 3. Okay, we need only 4 solutions and we have got 4 solutions. हमें 4 ही solution चाहिए. Students, our answer may be different from the answer of the book, क्योंकि a linear equation in 2 variables has infinitely many solutions. बहुत सारे इसके solutions होते हैं, endless solution होते हैं, और हमें कोई भी 4 solutions find out करने होते हैं. Next, example number 4. Find 2 solutions of each of the following. केवल हमें 2 solutions find out करना है. तो देखिए first, that is 4x plus 3y is equal to 12. First part. Let y is equal to 0. So 4x plus 3 into 0 is equal to 12. So 4x plus 0 is 12. So x is 12 by 4, that is 3. So one solution is 3, 0. हमेशा आप ध्यान रखिए कि x component पहले लिखते हैं, उसके बाद में then we write the y coordinate. Second solution, let x is equal to minus 3. So we can write 4 into minus 3 plus 3y is 12. That is minus 12 plus 3y is 12. So 3y is 12 plus 12. 3y is 24. And y is 24 upon 3, that is 8. So second solution can be minus 3, 8. ये हमारा first part complete होगा. Second part this side, 2x plus 5y is equal to 0.
पहले let x is equal to 0. So 2 into 0 plus 5y0. So 0 plus 5y0. Please note when any number is multiplied by 0 becomes 0. So 5y is 0. So y is 0 upon 5. That is 0. So the one solution is 0, comma 0. And a second solution, again we write let y is equal to 10. कुछ भी वैल्यू. So 2x plus 5 into 10 is equal to 0. 2x is minus 50. So x will be minus 50 by 2. That is minus 25. So second solution will be minus 25, comma 10. Yes. I think you have got it. कैसे find out करते हैं 2 solutions or 4 solutions. And now for the third part is 3x plus y is equal to 4. So I'll have to remove this. The third part is C. 3y plus 4 is equal to 0. लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में इसको लिखना होगा. देखिए अगर ये केवल वन वेरिएबल में लेते हैं, इन वन वेरिएबल, यस, देन ओनली 3y is minus 4, y is minus 4 by 3, that is the answer. But in two variable, इसको टू वेरिएबल में पहले लिखिएगा, रिप्रेजेंट करिएगा. हाउ we write 3x, sorry, that is 3y plus 4 is equal to 0. That is in one variable. We can write 0 into x plus 3y is equal to minus 4 if this is in two variables. Now let x is equal to 0. So we write 0 into 0 plus 3y is minus 4. So y is minus 4 upon 3. So one solution is 0, comma minus 4 upon 3. Let x is equal to 1. So we can write in this. This is our linear equation in two variables. 0 into 1 plus 3y is minus 4. So 3y is minus 4 means y is minus 4 upon 3. So second solution is 1, comma minus 4 upon 3. आप देखेंगे कि इसमें x वेरिएबल नहीं है, तो y वेरिएबल का तो वैल्यू फिक्स होगा, लेकिन यू कैन चेंज द वैल्यू ऑफ x. दीज आर द आंसर्स of this question. This question, the last part is very, very important. So thank you very much. That's all. Thanks.